Good afternoon, ladies and gentlemen. Let's begin our engagement. The floor is open. Jessica, we go with you first. Hi, sir. This is Jessica Taneja for DD India. So what is India's response to US President Donald Trump's remarks on Pakistan's nuclear testing? Okay. Yeshe? This is Yeshi Seri from Business India. There are reports suggesting that Taliban is going to send a diplomat to India. I'd like to know what level. Is it an ambassador level? And also, will this imply that the existing flag of Afghanistan will be changed and the Taliban flag will be there? And then what is left for India not to recognize the government then? Megha? Good afternoon, sir. This is Megha Sharma from NewsX, and my question is about the comments that have been made by US President Donald Trump yesterday. He's said that talks with India with regards to trade are going very well, and he may visit India next year. So the question is the Quad Leaders Summit cancelled? Is it happening? Is it going to happen without President Trump, or is it going to be postponed to next year when President Trump arrives? Shailendra? सर शरंद्र वांगू न्यूज़ 18 इंडिया। दो सवाल हैं सर। पहला तो ये कि आरएसएफ जो लड़ाके हैं सूडान में, उन्होंने एक भारतीय को किडनैप किया, उसके कुछ वीडियोस भी वायरल हुए हैं। जिसके बाद सूडान एम्बेसी में जो एम्बेसडर यहाँ पे है, उन्होंने कहा है कि हम टच में हैं भारत सरकार के और जो दूतावास भारत का है पोर्ट ऑफ सूडान में। तो उस बारे में कोई अपडेट है उनको रेस्क्यू कराने के लिए कुछ, क्योंकि ऑलरेडी मीडिया में बहुत कुछ आ चुका है। दूसरा सर ये कि मेजर रिटायर्ड विक्रांत जेटली, जिनको लेके अभी रिसेंटली शीला जेटली जो एक्ट्रेस है, उनका एक स्टेटमेंट सामने आया था कि अपने भाई की रिहाई के लिए वो कदम उठा रही है। उन्होंने कोर्ट का रुख भी किया है। तो क्या यूएई के साथ कोई संपर्क हो पाया इस मामले को लेके? सर ब्रह्म प्रकाश दुबे जी न्यूज़ से। मेरा सवाल है, कल यूएस प्रेसिडेंट का जो बयान आया है कि भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया है, अब मैं जल्दी ही इंडिया जाऊंगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरे अच्छे दोस्त हैं, तो इसको लेकर भारत का क्या कमेंट है? क्या रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया है भारत ने, या फिर अमेरिकी राष्ट्रपति फिर झूठ बोल रहे हैं? थैंक यू। So, several questions. First, coming to your question, Jessica. See, clandestine and illegal nuclear activities are in keeping with Pakistan's history that is centered around decades of smuggling, export control violations, secret partnerships, AQ Khan network, and further proliferation. India has always drawn the attention of the international community to these aspects of Pakistan's record. In this backdrop, we have taken note of President Trump's comment about Pakistan's nuclear testing. पाकिस्तान की गुप्त और गैर कानूनी परमाणु गतिविधियां उसके पुराने इतिहास से मेल खाती है, जो कि दशकों की तस्करी, निर्यात नियंत्रण के उल्लंघन, गुप्त साझेदारियां, AQ खान नेटवर्क और परमाणु प्रसार का और बढ़ाना पर आधारित रहा है। भारत ने पाकिस्तान के रिकॉर्ड के इन पहलुओं पर हमेशा दुनिया का ध्यान आकर्षित किया है। इसी पृष्ठभूमि में हमने पाकिस्तान के परमाणु परीक्षण पर राष्ट्रपति ट्रंप की टिप्पणी को नोट किया है। In regard to your question regarding Afghanistan, we had the visit of the Foreign Minister of Afghanistan to India recently. Since then, we've also had several exchanges in terms of development cooperation, as also telephone conversation between External Affairs Minister and the Foreign Minister of Afghanistan. We have kept you updated with developments as to how things are going to unfold. We will let you know as and when we have more information in this regard. As far as our own embassy, the upgrading of our
technical mission in Kabul is concerned, we told you that it has been upgraded to an embassy, and we are looking at as to how to now look at its functionalities, its functions, responsibilities, how we are going to increase its strength. So these are things that are under consideration and will happen subsequently. Megha, your question regarding, there are two things. One, of course, on Quad. On Quad, we have kept you informed that we see Quad as a valuable platform for discussion among the 4 Quad partners on issues of importance, of interest to them in the Indo-Pacific region. Quad is making steady progress. We recently, on the sidelines or as part of the India Maritime Week that was held in Mumbai, we had Quad Ports of the Future conference in Mumbai on 29th and 30th of October. We had almost 24 countries participated in it, which included the 4 Quad partners, and there were some 120 delegates which had participated in it. As far as the comments of President Trump regarding his on visit to India is concerned, I do not have anything on this to share. I will let you know when I have something to share with you. Shailendra, yes, आपकी जानकारी सही है और हम लोगों ने कि एक भारतीय नागरिक सूडान में वो आरएसएफ की कस्टडी में है, जहाँ की जैसा कि आप जानते हैं कि वहाँ पर अल फशेर जो जगह है, जो क्षेत्र है, वहाँ पर लड़ाई चल रही है। हम लोग सूडान के सरकार से और वहाँ जो अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं हैं उनसे लगातार संपर्क में हैं, ताकि जो हमारे भारतीय नागरिक उनकी कस्टडी में हैं उनको सही सलामत छुड़ाया जाए और उनकी सुरक्षा हम प्रदान कर सकें। जहाँ तक मेजर विक्रांत जेटली का सवाल है, हम लोग इस मुद्दे पर यूएई के सरकार से संपर्क बनाए हुए हैं। पिछले कई महीनों में 4 बार हम लोगों ने कॉन्सुलर एक्सेस मांगा और उसके तहत हमारे दूतावास के अफसर उनसे जाके मिले हैं। साथ ही साथ हम लोग इनके परिवार से और उनकी धर्मपत्नी हैं उनसे संपर्क में रहे हैं। अभी हाल ही के दिन में 3 नवंबर को दिल्ली हाई कोर्ट का भी आदेश आया था और उसके मुताबिक जो भी हमसे जो असिस्टेंस हो सकता है, ऑल पॉसिबल असिस्टेंस, उसको हम लोग उनको ऑफर कर रहे हैं। What is the reason for this? Okay, so on the case of Major Vikrant Jetli, we are in touch with UAE authorities. Our embassy is seized of the matter. We have been making consular visits to him, and we have done so on 4 occasions. We are also in close touch with his family, including his wife. We are also, as is natural, whenever there's an Indian national who needs support, we are offering all possible assistance. On 3rd November, this matter came up in Honorable Delhi High Court, and the High Court had given certain directions. Based on those directions, we are providing all possible assistance to Major Vikrant. ब्रह्म, देखिए, जहाँ तक ऊर्जा निर्यात करने का सवाल है या उसकी सोर्सिंग का सवाल है, आप लोग हमारे जो अप्रोच है उससे भली भांति वाकिफ़ हैं कि किस चीज़ पे आधारित होता है। जो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी की जो ज़रूरतें हैं उस पर आधारित होता है, और उसके अलावे जो ग्लोबल डायनेमिक्स बाज़ार में, अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में चलता है, उस पर आधारित होता है। तो मैं कहूँगा कि इस बात पे हम लोगों ने कई दफ़ा टिप्पणी किया है, उस पर आप अपना ध्यान लाएं। We will go for more questions. Srinjoy. Sir, in the past, we know about
Pak institutional help to terrorist organizations. But just recently, a Pakistani minister in the Shehbaz Sharif government actually visited a Lashkar-e-Toiba institution. So what are your comments on it? Is this a sort of crossing the Rubicon in some senses? Jugal? Hi, Sam. Jugal from the Collective Newsroom for the BBC. So one clarification. Firstly, what's India's stand on President Trump's comments on whether Pakistan is continuing to test as we speak? And the question is that there's a recent interview by Sheikh Hasina in the Hindu where she says that some mistakes were made in the last days of her regime and her administration. What is India's take on the violence that has happened there, that was documented by the UN as well? Thank you. Okay, Ajay. Jaiswal sir, good evening. I'm Ajay Banerjee with the Tribune. Sir, you have mentioned about your reaction to Donald Trump and his claim regarding Pakistan having tested nuclear weapons or conducted nuclear blasts. Sir, is India aware independently? Are we independently aware of Pakistan having tested any such weapon? Okay. Keshav? So thank you, Keshav Padmanabhan from the Print. My first question is, there is reports that the US has sent a draft resolution to the UN Security Council members of this Gaza International Force, the Stabilization Force. My particular question is, would India be ready or willing to participate in such a force in any capacity if there is a UNSC mandate to it? And have you been briefed on this by the US or discussed this? And the second question I have is with regards to the Indians in Myanmar and these camp centers. Just yesterday there was a statement on a number of Indians being sent back home, and this has been happening throughout this year. So what are the steps that the Indian government is taking to prevent Indians from being lured to such camp centers in Myanmar, sir? Thank you. Sahil? Sir, I'm Sahil Pandey from ENI News Agency. My question is basically on the update of Indian nationals returning from Thailand. What are the numbers and what's the update on that, sir? Okay, Srinjoy, first to your question regarding terrorism. We all know, which country is the factory of terrorism, which country is the global epicenter of terrorism. So I need not elaborate more for you to get an answer to your question. Jugal, on first part of a question, I already answered. I said what we think of President Trump's comments regarding Pakistan's nuclear testing. On the comments made by former Prime Minister Sheikh Hasina, I have no comments to offer. Ajay, again, on nuclear issue, I have said what I had to say in response to President Trump's comments. Keshav, India has welcomed the Gaza peace plan. We hope that this peace plan will go forward and there will be lasting peace in the region. As far as International Stabilization Force is concerned, I don't have anything concrete to share with you. I shall come back. On Myanmar, Sahil's question is related. 270 Indian nationals, they returned yesterday. They were got back from Mysore in Thailand on 2 special aircrafts. When there was a crackdown in Myanmar, in some of those scam centers, they came into Thailand, and the Thai authorities thereafter undertook certain processes that were required on their side. After that, and once we verified the documents of all these people, made sure that they are Indian nationals, they were flown to India yesterday. I understand that there's some more Indian nationals who are there right now in Thailand, and they will also be coming back
in a few days' time to India. I shall keep you updated on the numbers, etc. Specifically, Keshav, the last 2 years from this particular platform and several agencies of Government of India have constantly put out this point and travel advisory to Indian nationals to stay away from these scam centers because the price that one has to pay is very high. People go there, they are met with violence, there are all sorts of exploitation that happens there. So we once again urge all Indian nationals to stay away from the job offers that are made of such nature, and also to verify people who are the recruiters, people who the foreigners or the agencies, whether Indian or outside, who offer these jobs, because it comes with a lot of risk. So I would once again emphasize that our nationals should take note of our advisories and what we suggest for them. Okay, shall we go for more? Huma? I'm Huma Siddiqui. There were reports that more and more Indians are joining the Russian army, though they have been. So the last time you said that you were in conversation with the Russian government. So how have you identified who are these agents who are pushing the Indians towards the Russian army? Madhu? सर मधुरेंद्र, मैं न्यूज़ नेशन से। मेरा सवाल प्रेसिडेंट ट्रंप के बार बार होने वाले उस दावे को लेकर है जिसमें भारत और पाकिस्तान युद्ध के दौरान जो विमान गिरे हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और वो 8 तक पहुंच चुकी है। तो किस तरह से प्रेसिडेंट ट्रंप के इस बयान को आप लोग ले रहे हैं? क्या इस पर कोई जवाब उनको दिया जाना चाहिए या देंगे? Elena, you had something? Always. Please. Good afternoon. Will be the preparation for the Russian-Indian summit on the agenda of the upcoming visit of Dr. Jaishankar to Moscow, which will take place, as I know, on 17th, 18th of November, or it will be restricted only by the SCO agenda? And is there any clarification on the dates of the Russian-Indian summit? Thank you very much. Dates of, sorry? Russian-Indian summit. Oh. सर, मैं मनीष हूँ TV9 भारतवर्ष से। पिछले दिनों हमने देखा कि अमेरिका ने मिनटमैन 3 मिसाइल का परीक्षण किया जो कि न्यूक्लियर वेपन को कैरी कर सकता है। रूस की तरफ से भी 3 ऐसे न्यूक्लियर पावर्ड वेपन का टेस्ट किया गया है। भारत जो कि खुद भी एक न्यूक्लियर पावर कंट्री है, वो इस हथियारों की रेस को किस तरह से देखता है, स्पेशली जब प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं कि बहुत सारे कंट्री न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हैं? राठी जी। सर, मैं संजीव राठी, UNI वार्ता से। सर, आपने बोला कि हम पाकिस्तान की परमाणु गतिविधियों के बारे में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान आकर्षित करते रहे हैं, तो क्या अब भी भारत एक बार फिर इस मुद्दे को किसी मंच पर उठाएगा? नीरज। सर नमस्कार, मैं नीरज दुबे, प्रभा साक्षी से। सर, अमेरिका के राष्ट्रपति का एक बयान आया है, इसमें उन्होंने कहा है कि साउथ अफ्रीका को G20 से बाहर किया जाना चाहिए। भारत साउथ अफ्रीका की अध्यक्षता को कैसे देखता है? ट्रंप ने ये भी कहा कि वो नहीं जा रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे G20 समिट? So, Huma, first to your question. In the last few months, yes, we have come to know, we have been informed of several Indian nationals who've been recruited in the Russian army. We have once again taken up the matter with the Russian authorities to have them released at the earliest, as also to put an end to this practice. As per our understanding, there are 44 Indian nationals presently serving in the Russian army. We are in touch with the Russian side. We are also in touch with the families of these peoples and giving them an update on the matter. We once again take this opportunity to convey to all that one should stay away from offers being made
to serve in the Russian army, because it is an offer that is fraught with danger to life, and there's risk to life. So, and once again, we have said this so many times, in spite of our repeated reminders, people continue to enlist. It is obviously, if somebody wants to do it, he or she, we cannot stop him, but we continue to press that you must be aware of the dangers that are there once you sign up for these jobs. I understand that in past also, the law enforcement authorities in India have taken action against people, and they continue to pursue this matter so that people are not tricked into joining such risky endeavors. हाल ही के दिनों में हम लोग को ये पता चला है कि कुछ भारतीय नागरिक को रूसी फौज में भर्ती किया गया है। पता चलने के बाद हम लोग ने इस मसले को रूसी सरकार से यहाँ नई दिल्ली में और मास्को दोनों जगह उठाया है, ये कहते हुए कि जल्दी से जल्द उनको रिहा करना चाहिए, और साथ ही साथ जो ये प्रक्रिया चल रही है हमारे लोगों को वहाँ के फ़ौज में भर्ती करने का, उसको बंद किया जाना चाहिए। हम लोग करीबन हमारे इंफॉर्मेशन जानकारी के हिसाब से 44 भारतीय नागरिक अभी रूसी फौज में हैं, और हम लोग प्रयासरत हैं कि वो वहाँ से जल्दी रिहा कराए जाएं, और हम लोग उनके परिवारजन से भी संपर्क में हैं। एक बार फिर से मैं कहना चाहता हूँ इस मंच से कि रूसी सेना में भर्ती होने वाली जो ऑफ़र है उससे लोग दूर रहें, क्योंकि इससे जान को खतरा है, और जैसा कि हम लोगों ने देखा है कि कई एक सारे लोग वहाँ फंसे हुए हैं और उनको निकालने की गुहार की जा रही है, और हम लोग इसमें लगे हुए हैं। मधु, आपका सवाल किस मुद्दे पे था? अच्छा, हाँ, देखिए, जहाँ तक ऑपरेशन सिंदूर का सवाल है, ऑपरेशन सिंदूर के साथ जितनी भी गतिविधियाँ हुई हैं उससे आपको हम लोगों ने भली भांति अवगत कराया है, और जितने, अगर आप हमारे जो प्रीवियस पहले के जो स्टेटमेंट्स हैं और पहले भी हमें प्रेस ब्रीफिंग है, सारी बातें को हम लोगों ने स्पष्ट रूप से रखा है। तो मैं कहूँगा कि उस जो टिप्पणियाँ आप देख रहे हैं वो ठीक है, लेकिन हमने जो कहा है ऑपरेशन सिंदूर के बारे पे, उस पर आप अपना ध्यान केंद्रित करें। Elena, on both the visits of the summit that you referred to, as also the visit of External Affairs Minister, we will let you know as and when we have an update on both these proposals. मनीष, देखिए, जहाँ तक परमाणु मसले का सवाल है, हम लोग की तरफ से जो भारत का पोजीशन, जो पक्ष है, उसको पब्लिक में रखा गया है। जो हमारे परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं जिनीवा में, वो इस बात को वहाँ पर कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्ममेंट जो है इस पे चर्चा होती रहती है, और वहाँ पर हम लोगों ने भारत का पक्ष स्पष्ट रूप से, साफ रूप से इसको रखा है। तो मैं कहूँगा कि आप अगर हमारे उस वक्तव्य को देखेंगे तो आपको स्पष्ट रूप से पता चलेगा कि भारत क्या सोचता है इन मामलों पर। राठी जी, जहाँ तक मंच की बात है, मैं इस मंच से बोल रहा हूँ, इसका मतलब मैं बात को उठा रहा हूँ, बात को उजागर कर रहा हूँ, लोगों तक पहुँचा रहा हूँ। नीरज, देखिए, G20 के हम सदस्य हैं, G20 की मीटिंग होने वाली है। अब दूसरे आदमी क्या सोचते हैं उसके बारे में तो मैं कहूँगा कि उस दूसरे आदमी से पूछें या वो तीसरे आदमी से पूछें। इसमें जहाँ तक भारत का सवाल है, हम तो G20 के मेंबर हैं। Kalol. Kalol Bhattacharjee from the Hindu. Sir, in a story in the Hindu, Sheikh Hasina has mentioned that she's almost certain to get a death sentence from the International Crimes Tribunal in Dhaka. And if she really gets the death sentence from ICT in Dhaka, what is really the options that India has? Because do you think that would be a challenge for India as well? So, look, Kalol, I have no comments to offer. I've just said on the
on the interviews that she's made recently, so I will leave it there. Thank you very much, ladies and gentlemen.